अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीर अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है माई ट्रिप टू इंडिया एक्सप्लोरिंग केरला। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है माई ट्रिप टू इंडिया एक्सप्लोरिंग केरला। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। I can't believe I'm about to say this, but hello from India. It is so beautiful and pristine up in these mountains. It feels like I'm sitting up in a cloud. There's patches of fog among the hills, and we're staying in these tents that are tucked into the mountainside, so it feels so immersive, and it's so quiet. The next day we headed down the mountain, which was one of the most scenic drives of the trip. Every 5 minutes I wanted to stop and take pictures, and we made it to Theketi to visit Periyar National Park for a boat safari trip. And if you like monkeys, this is the place for you. These guys are everywhere around the boat launch, and they're not shy. You can sit just a few feet away from them and take pictures. A boat safari is such a great way to see wildlife because in the park, all animals eventually come down to the water to drink. So you have a chance to see everything here, and if you're lucky, you can even spot elephants and tigers in this park. I've made it to the Misty Mountain Experience in Pyramidoo, which is a beautiful property, and I'm staying in the cutest little cabin-like room with this beautiful balcony I can sit out on. And here I'm going to be learning more about the tea making process, and then this afternoon I'm going out on a Jeep ride to explore the property some more. So one of the experiences at the Misty Mountain Experience is a tea factory tour, so you can see how it's all made. And one of the very basic things about tea that I didn't know before this tour is that both black and green tea come from the same plant, and it requires a specific temperature and humidity to thrive, which is what makes this region and property so special. But something else that makes the property incredible is it's perched on a mountainside with waterfalls running down it. Guests can go on a scenic Jeep ride, and the views are so beautiful. Today I've made it to Alapi, and I'm doing one of the coolest things I've ever done traveling. I'm staying on a private houseboat tonight. So it's just me and my guide and a few crew members here to operate the boat and cook and keep everything running, and it is so cool, and it has been so relaxing to sit here and drift through the backwaters and take in the scenery.
The next day was the Champions Boat League snake boat races. This event is an annual series of races on the backwaters of Kerala, with teams of rowers racing these long, skinny boats called snake boats because of the shape. And it's a big deal. People line the banks of the backwaters for it. One of the highlights of this day was paradise. This property that I'm staying at is kind of like if a hotel and an Airbnb were mixed. I'm the only guest here, so I have the entire property to myself, but there's also staff here. It's like a private stay. It's called Vismaya, and this outdoor shower situation I have is amazing. Outside of my room, I have a little private courtyard with all of the bathroom things, and there's this rain shower. I came out here at like 9 p.m. last night. It was like still 80 degrees, and I stood under this shower, and it was perfection. If you've never stayed somewhere with a private outdoor shower like this, you need to add it to your bucket list, but it needs to be somewhere tropical. I've stayed at places in the desert with outdoor showers, but it cools off so much at night that like in the early morning or late at night when you would typically take a shower, it's kind of too cold to be pleasant, but when it's tropical and it's still warm at night or in the morning, it's amazing. And then this morning I got up at sunrise and swam in the pool, and I'm just having the best time. Next, we drove to a spot nearby for a village experience where I got to visit some local homes and learn a little about their way of life. They showed me how they produce goods like woven palm shades, and I got to see how they fashion ropes, which was really incredible. This took them less than a minute to make from a coconut husk, and it's so strong. Wow, that's incredible. I also got to see this really cool coconut tree climbing device, and then we headed to the Murari Beach Resort on the ocean, which is a really beautiful property. They also place a strong emphasis on sustainable tourism, and they have this tea cart where a woman makes what's called meter chai because it's poured from a meter high, and she was so good at this. The resort is especially known for its Ayurvedic medicine center, and of course the beach. The sunset over the Arabian Sea was incredible. Well, this is it for my time in India. I'm back where I started, in the city of Cochin. I didn't really know what to expect before coming here. Actually, my guide and I were talking about this. He said a lot of the world, especially Americans, when they think of India, they just think of the Taj Mahal and nothing else, where in reality, it's actually quite a large country with a lot of other things in it. So I didn't come here with a lot of expectations, which is sometimes the best way to experience a new place. And I loved the scenery. I loved the foggy mountainous hills and the tranquil backwaters. If you are planning a visit to Kerala and you're interested in doing a kind of like a road trip through the state like I did, my number one tip would be to book a guided tour. About an hour into the tour, I realized there was no way I ever would have been able to navigate it by myself. So definitely if you're planning to come here and move around a lot, I would totally do a tour. Thanks for coming along with me on this one. I hope you all are doing well, and I will see you next time. Bye. जी जनाब, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अच्छा, कुदरत ने अगर आपको खूबसूरती दी है, कुदरत ने अगर आपको नेचुरल ब्यूटी दी है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं उसे संवारने वाले, बहुत कम लोग होते हैं उसे संभालने वाले। तो मुझे ऐसा लगता है कि केरला के लोगों को नेचुरल ब्यूटी मिली है, लेकिन उन्होंने उस नेचुरल ब्यूटी का फ़ायदा भी उठाया है, उस नेचुरल ब्यूटी को मज़ीद खूबसूरत बनाया है ताकि और टूरिज़म को फ़रोग़ मिले, और टूरिस्ट आते हैं, उससे मुल्क को फ़ायदा होता है, राज्य को फ़ायदा होता है। केरला अपने आप में बहुत खूबसूरत है, अच्छा बहुत डिफरेंट है, यानी कि कुछ हर इलाके की अपनी अपनी खूबसूरती होती है, हर इलाके की अपनी अपनी ग्रीनरी होती है, लेकिन केरला का अच्छा कल्चर बहुत
मतलब खूबसूरती के साथ साथ कल्चर बहुत रिच है, यानी कि मतलब बंदा जाए तो एक अलग ही दुनिया में चला जाए। मतलब ये चीज़ें किसी भी गांव देहात में कहीं पर भी नहीं मिलती जिस तरह से मैंने आज मतलब केरला का देखा। अच्छा, ये जो कोकोनट के उससे मतलब 1 मिनट में रस्सी बन गई, बाकायदा मतलब उसको मसल की रस्सी बना ली, और टूरिस्ट के लिए बाकायदा बहुत खूबसूरत जगह बनाई हुई है। दिमाग इनका बहुत तेज़ है। दिमाग तेज़ इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से जो जगह उन्हें अवेल हुई उसे मज़ीद खूबसूरत किस तरह बनाया गया। आपने देखा पार्क टाइप की जगह बनी हुई है, हट टाइप के बने हुए हैं, नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर करके। जैसे बोट बनाई तो बोट में भी कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं, लोहे की बोट नहीं है, स्टील की बोट नहीं है, प्लास्टिक की बोट नहीं है, लकड़ी की बोटें यूज़ हो रही हैं। चाय किस तरीके से ठिये लगाए हुए हैं चाय के, और चाय का जो ठिया है वो भी नेचुरल लकड़ी से बना हुआ है। मैं मतलब है कि इनकी एक तो कुदरत ने इनको जो तोहफ़ा दिया, उस कुदरत के तोहफ़े को इन्होंने खूबसूरती से संवारा है, ये मैं इनको बहुत ज़्यादा दाद दूंगा। अच्छा, हमारे यहाँ मैंने एक चीज़ में इंडिया को देखा है जो बहुत डिफरेंट है हमसे। हमारे यहाँ महिलाओं को आप ऐसे काम करते हुए नहीं देखेंगे। हमारे यहाँ चाय बेचने वाला है तो वो जेंट है, शॉपकीपर है तो वो भी जेंट्स है, कोई भी कहीं पे भी काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है तो वो भी जेंट्स है। तो हमारे यहाँ कभी भी इस तरीके से मैंने अक्सर फूड स्ट्रीट में भी देखा है, कुछ ठेले खड़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं। मैं अक्सर इंडिया की वीडियोस देखती रहती हूँ। मैं इंडियन कंटेंट ज़्यादा देखती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इंडियन कंटेंट देखना, मुझे पसंद आता है। तो मैं अक्सर उनके खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि मुझे इनका शुरू से बचपन से ही है, तो अब इंस्टा भी खोलूँगी तो ये देखूँगी, फेसबुक भी खोलूँगी तो ये देखूँगी, यूट्यूब खोलूँगी तो ये देखूँगी। तो मेरे लिए मेरी सोशल साइट्स का मतलब है इंडियन कंटेंट देखना। तो मैं अक्सर जब इनकी चीज़ें देखती रहती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने खुद से चीज़ें आती हैं। तो अक्सर ना जैसे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बाकायदा जाते हैं किसी ठेले पे और उनसे पूछते हैं आप कैसे करते हो, आप क्या करते हो। आप यकीन करें, खाना कोई स्पेशल डिश है, मोमोज़ बेच रही हैं, कचौड़ी बेच रही हैं, कुछ भी XYZ, आप यकीन करें मैं जितनी वीडियोज़ देखती हूँ 70% महिलाएँ, 70%, यानी कि मैंने देखा है पुरुष जो होते हैं वो कम होते हैं, महिलाएँ ज़्यादा होती हैं। ये चीज़ को मैं बहुत सपोर्ट करूँगी और बहुत अप्रिशिएट करूँगी बल्कि इन लोगों को, क्योंकि महिलाएं बिल्कुल साइड बाय साइड काम करती हैं लाइक अ मैन। क्योंकि उनके अंदर ये चीज़, ये हेजिटेशन नहीं है, ये झिझक नहीं है कि जी हम क्यों बाहर निकलें, हम क्यों करें। हर काम को वैसे ही संभालती हैं जैसे एक मर्द संभालता है, हर काम को वैसे ही करके दिखाती है जैसे एक मर्द करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इतनी बुढ़बारी उनमें, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना हौसला है उन लोगों में। हमने थोड़े दिनों पहले भी एक वीडियो देखी थी, लद्दाख के हवाले से देखी थी या फिर नॉर्दर्न इंडिया के हवाले से कोई वीडियो देखी थी। इसके अंदर बहुत खूबसूरत जगह थी वो भी। वहाँ पे रेस्टोरेंट देखा हमने, वहाँ पे भी महिला थी, होटल देखा वहाँ पे भी महिला थी, शॉपकीपर हमने देखा एक महिला ही थी। तो वहाँ पे भी ज़्यादातर जो काम संभाला हुआ था महिलाओं ने संभाला हुआ था। मैंने अक्सर देखा है इस तरीके की वीडियोज़ में महिलाओं को ज़्यादा दिखाया जा रहा होता है या महिलाएँ ज़्यादा काम कर रही होती हैं। अब आते हैं खूबसूरती। मैं अक्सर ग्रीनरी के हवाले से बातें करती हूँ कि यार ग्रीनरी बड़ी कलरफुल होती है, डिफरेंट कलर्स होते हैं ग्रीनरी के, ऐसे लगता है। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगी केरला की हवाओं के बारे में, फिज़ाओं के बारे में, बादलों के बारे में। मतलब वो व्यू बहुत ही अनबिलीवेबल सा था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं देखा ऐसे। उनके कदमों में बादल थे, कदमों में बाकायदा वो खड़ी हैं जहाँ पे, वहाँ पे बादल उतरे हुए, और क्या व्यू था, पहाड़ और पानी और झरने। मतलब वो जो था वो वाकई मैं ये कहूँगी उन्होंने हमें क्या दिखा दिया कैप्चर्ड करके, बहुत आउटस्टैंडिंग था। इस तरीके की ब्लॉग्स हम अक्सर देखते रहते हैं टूरिज़्म के हवाले से, लेकिन केरला में ये वाला मैंने व्यू पहली बार देखा कि बादल आपके पाँव तले हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत उम्दा लग रहा था। फिर चाय की पत्ती के बागात हमने देखे। अच्छा, मैं हैरान हो गई, सेम कलर की पत्ती है। एक वीडियो भी हमने बड़ी डिटेल में देखी थी पत्ती के हवाले से, सेम कलर की पत्ती है। ब्लैक टी भी उसी से बनेगी, ग्रीन टी भी उसी से बनेगी। मतलब वो उसका फिल्टरेशन का बताया कुछ होता है, सुखाने का कोई तरीका होता है जिससे चेंजिंग आ जाती है। तो केरला अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये कोची सिटी से गई थी मुन्नार, तो कोची सिटी से जब मुन्नार गई थी ये, उसके बाद उन्होंने इतना एंजॉय करा, आखिर में उन्होंने थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट भी कर दी कि इनके थ्रू आप आएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ पे रुकी थी वो जगह अपने आप में बहुत आलीशान थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ही उम्दा लग रही थी। मतलब बहुत कंफर्टेबल थी, इंसान थके नहीं, बेजार ना हो। मैं अक्सर हमारे यहाँ की बातें करती हूँ, आपको मैंने कई बार बताया कि हम जाते हैं तो हमारे यहाँ रुकने की जगह नहीं है, हमारे यहाँ ट्रैवल करने के लिए चीज़ें नहीं हैं। अगर हमें सी साइड तक जाना होता है तो हम यकीन करें आधा घंटे चलकर सी साइड जा रहे होते हैं, हमारे रक्शे नहीं जा रहे होते हैं, हमारा कुछ भी हमारे पास नहीं होता है ऐसा ट्रैवल करने के लिए। चीज़ है, बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।